पता चलती हैं हमारी नीच की नहीं है पर but if you look at tutorial and how to do videos, educational videos, product review videos, these are the kind of videos that we need to do in order to promote product sales. What kind of content to prepare और हम content को क्यों prepare करेंगे for the first of all we'll do it for people who have the awareness about the problem but not about the solution. उन लोगों के लिए जिनको अपने प्रॉब्लम का पता है पर सॉल्यूशन का नहीं पता है उन लोगों को हम सॉल्यूशन से अवेयर करेंगे. Second are the type of people who will educate how to use that product, how to use our products in order to solve their challenges. And third is to generate sales by building trust over our personal brand and over our being influencing them through our brand. So these are the three primary reasons why we prepare content. Before we get into the details about which platform to use, how to use that platform, I just want to put across some facts. Fact one, content strategy is a long-term game and results are not necessarily instant. एक सेशन आप लोगों का देखने से although I'm feeling thrilled and excited and challenged at the same time. Excitement इस बात की है कि I am able to share my knowledge and make a difference in more than 2,000 people's life. अगर आप इस सेशन से कुछ भी सीख के जाते हो और आपको implement करते हो आप अपने social media में और आपको results मिलते हैं, so that is why I'm excited. Challenge is कि हमारे पास सिर्फ 40-45 मिनट 60 मिनट्स हैं इस यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए और विच इज नॉट इनफ. सो फर्स्ट फैक्ट कि आप योर learning has to be consistent. You'll have to be consistent in terms of learning, in terms of posting content, and in terms of improving based on the feedback that you get from the market. These are the three pillars of content marketing. Consistency in terms of posting, consistency in terms of learning, consistency in terms of improvement based on what the feedback they're getting from the market. तो पहली कंसिस्टेंसी हमारी पोस्ट करने में हो गई. आपको रेगुलर पोस्ट करना जरूरी है. आप बस पोस्ट करके ये नहीं कह सकते मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मैं छोड़ दूंगा इसे पोस्ट करना. आप यू विल हैव टू बी अप टू डेट अबाउट द एल्गोरिथम्स, अबाउट व्हाट इज ट्रेंडिंग, कौन सा म्यूजिक ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन से मीम्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो आप उनको कैसे यूज कर पाएंगे, कौन से अभी जैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आया है जहां पर आप कोलैबोरेटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. सो यू विल हैव टू बी अपडेटेड ऑन योर फिंगर टिप्स. So you'll have to continuously learn. The third is improving based on the feedback. So which means you'll have to get inside your analytics, Instagram analytics, and understand the kind of people you're attracting and accordingly make improvements in your content. Which means आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और उसके बेस पे अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी को लगातार चेंज करना पड़ेगा. These are the three pillars. एकदम से रिजल्ट्स नहीं आएंगे. कोई भी दुनिया में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम्स 100% ऑफ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो और चल जाए. तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी. यहाँ पर इस सेशन पे आपको एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं हम. I will give you a head start based on what you should do, what you should not do right away on your Instagram. What are the best practices? But still, you'll have to make that make your own strategy over time by consistently putting out content, by consistent learning and continuous improvements based on the feedback and the analytics of your Instagram account. Fact three, why we are all here today, not to increase our reach, not to get likes on our posts, not to get more posts or followers. We are here to make money. So everything is about how we will translate our efforts into money, which will come into our pocket. How to translate content creation efforts into money. हम जो content create कर रहे हैं social media पे, उससे हमारी जेब में पैसा कैसे आएगा? These are some of the facts that I want to put across before we can dive into the session. Let's talk about what content strategy is and how does it work. Content strategy only works when you know the target audience and its behavior on the platform you're targeting. अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में there are three major keywords: target audience and behavior and platform. हर ऑडियंस का बिहेवियर प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जाता है. यूट्यूब पे उनका बिहेवियर अलग है,
गूगल सर्च पे उनका बिहेवियर अलग है, इंस्टाग्राम पे उनका बिहेवियर अलग है, व्हाट्सएप पे बिहेवियर अलग है, ट्विटर पे बिहेवियर अलग है। तो हमको समझना ज़रूरी है हमारी टारगेट ऑडियंस में कौन लोग आते हैं। अभी अभी सर और सिमरत भी बात कर रहे थे कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नीच डाउन। So first of all, we need to understand who our target audience is and how they are behaving on the platform that we are putting out content. These are so we are going to be talking about each segment for a while. So first we are going to be talking about target audience. Our target audience के दो parts है. First is customer avatar and second is their behavior online. So let's do this activity alongside me. और इस एक्टिविटी को मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सबमिट करें इस सेशन के बाद हिताइची को उनकी ईमेल आईडी पे. So there are two parts to customer avatar, and we do this exercise all the time in our webinars. This is actually the first exercise that we do, with our customers, which is they'll have to define the demographics and the psychographics of their customers. Demographics are validated data which can be validated through some tangible document or to your government IDs. For example, marital status, it can be validated. Your age can be validated. Your gender can be validated. Where do you live can be validated. Your education can be validated. So these will come under the category of demographics. तो आपके टारगेट ऑडियंस के क्या डेमोग्राफिक्स हैं? आपको कुछ डेमोग्राफिक्स इसके आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के अकाउंट पे भी जाओगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे कि इस टाइप के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या एज ग्रुप है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, थोड़े से आपको वहां से मिल जाएंगे. कुछ आप लोग अपने एक्सपीरियंस से डिफाइन कर सकते हो, एंड आई विल गिव यू वेज कि हाउ यू विल बी एबल टू डिफाइन all of this. But this is the first thing that you will need to do, which is define target audience in as much detail as possible. Define your customer avatar. So first is demographics, which data which can be validated: their gender, their age, their location, their marital status, and their income level, their education, their employment status. All of this will come under the demographics of customer. The psychographics, on the other hand, is everything to do with the psyche, that how they are behaving, what are their interests, who are the people that they follow, what are the books that they read, what are the websites, what are their values, what is their lifestyle, what are their hobbies. So ये वाली चीजें जो कि दिमाग से जुड़ी है और जो बिहेवियर से जुड़ी है. अगर मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ तो मैं किन लोगों को फॉलो करता हूँ, किन चैनल्स पे जाता हूँ, किन वेबसाइट्स पे जाता हूँ, मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है. दिस विल ऑल कम अंडर द साइकोग्राफिक्स ऑफ द कस्टमर. आपको दोनों समझने पड़ेंगे क्योंकि सेम डेमोग्राफिक्स के अलग अलग साइकोग्राफिक्स होते हैं. और ये जितना भी सोशल मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट. These are not social media platforms. We should not call them social media platforms. These are businesses. These are advertising businesses. Only thing that they want to do is keep the user on the platform so they can serve them with more advertisements and make money. Facebook, Instagram, YouTube, these all are advertising businesses. These are not, they position themselves as social media platforms, and that's why we consider them as social media platforms. In reality, they are advertising businesses. उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस वीडियो पे ज्यादा रुकते हैं, किस वीडियो पे कम रुकते हैं, किस टाइप की पोस्ट लाइक करते हैं, किस टाइप की पोस्ट डिसलाइक करते हैं, किस पे हम स्क्रॉल अवे कर देते हैं, किस पे हम स्क्रीन पे रुक जाते हैं. they are using all this data and giving it to advertisers to show us the relevant advertisements and show us the relevant ads. तो ये साइकोग्राफिक्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट है डिफाइन करना, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि तभी आपके टारगेटेड यूजर्स तक आप रेलेवेंट कंटेंट पहुंचा पाओगे. सिर्फ डेमोग्राफिक से काम नहीं चलता. आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. अगर ये एग्जांपल्स देखिए आप, अगर आप हेल्थ वाली इंडस्ट्री में, सो इस टाइप का आपका कुछ डेमोग्राफिक्स एंड साइकोग्राफिक्स लगेंगे. एज 18 to 40, ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्रोफेशनल्स आर हाउसवाइफ्स, एंड ईयरली इनकम उनकी कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है, इंटरेस्ट क्या है, दैट दे विल फॉलो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स. किस टाइप का लाइक शोज लाइक मिस्टर ओलंपिया, विजिट्स healthline.com, किस टाइप की वेबसाइट्स को वो विजिट करते हैं. बिहेवियर क्या है, they frequently buy health supplements, they read books about how to lose fat. So this is a customer avatar for someone who's from the health industry. Just an example, you can do it on your own.
Second, working professional. This is someone for who's interested in beauty. So who they will follow beauty influencers, they will follow fashion designers, they will follow makeup artists, they will like cosmetic exhibitions. Their behavior would be they will buy beauty products and supplements frequently online. तो ये इनका जो ब्यूटी में है उनका कस्टमर अवतार ऐसा लगेगा, वो इनके इंटरेस्ट होंगे कि वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, और या ब्यूटी के मेकअप के प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन. सेम विद कुकिंग, फॉलोज कुकिंग इन्फ्लुएंसर जो कि मास्टर शेफ इंडिया, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, उन जैसे चैनल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग कुकिंग के प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करते हैं ऑनलाइन. तो ये उनका इंटरेस्ट बिहेवियर हो गया, विच इज ऑन साइकोग्राफिक्स लेवल. And their age could be 30 to 50. Occupation homemakers, because this is more about cooking, so mostly homemakers. Yearly income उनकी कितनी होगी, तो yearly income उनकी average working professional से कम होगी, which is 2 lakhs to 10 lakhs, or maybe even none. Maybe they're they'll have to ask money. So you'll have to be aware about your target audience, how you will do this activity. Now this is very important कि आप लोग पूछोगे कि यार मेरे को तो अपने डेमोग्राफिक्स, अपने साइकोग्राफिक्स पता ही नहीं, अपने टारगेट ऑडियंस के मैं कहाँ से निकालूं, मैंने कभी एक्टिविटी नहीं करी. सो देयर आर 3 ways how you can do this activity. First is by your experience. You'll have to look back at your experience. आप अपने एक्सपीरियंस में झांको और देखो कि आपने जो भी कस्टमर्स बनाए हैं उसमें आपको पैटर्न मिल जाएगा, एज का, लोकेशन का, इनकम लेवल का, और उनके मैरिटल स्टेटस का. तो उनको डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस डिफाइन करो सबसे पहले. The second is analytics. You will have to get into analytics of your Instagram account, which will give you what kind of people, from which location, from which time zone, at what time of the day you're attracting. So, which will give you second insight into your customer avatar, which is analytics. The first is look back at your experience. Second is go inside your Instagram and Facebook analytics and understand, what kind of people you're attracting. What happens oftentimes, the people that we want to attract and people that we really attract from our content are two very different target audiences. And first of all we'll need to be aware, हम जिन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं और जो हमारा कंटेंट देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग होते हैं. तो हमें समझना जरूरी है हमारी एनालिटिक्स में जाकर कि हम लोग कैसे जो एग्जिस्टिंग हमारे कस्टमर्स, हम लोग या हमारे जो व्यूअर्स हैं कंटेंट के, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और किन को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अपने एक्सपीरियंस में जिन लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनको आपने उनके बीच में सिमिलैरिटी है आपकी ऑडियंस के बीच में, ऑनलाइन ऑडियंस के बीच में, और आपके प्रीवियस कस्टमर्स के बीच में. द थर्ड, एंड दिस इज अ एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू, व्हिच इज अ सर्वे. There's something known as power base. Power base का मतलब होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, या आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में जो लोग आते हैं, बेसिकली जो लोग आपको जानते हैं और आपको टाइम देने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो आपके पावर बेस में आपको एक सर्वे करना होता है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपकी टारगेट ऑडियंस में फॉल करते हैं. तो आपकी टारगेट ऑडियंस में जो फॉल करते हैं, ऐसे 10 लोगों को आप सर्वे भेजो, और आपका सर्वे का एनालिसिस, इट्स अ गुड स्टार्ट अगर 10 लोगों ने भी वो फिल करा. तो सर्वे करने का मतलब हुआ, आप पूछो कि भाई किस टाइप के चैनल्स को आप लोग फॉलो करते हो, किस टाइप के आप बुक्स पढ़ते हो, और आपका इनकम लेवल क्या है. अगर इनकम मे बी दे आर नॉट टू ओपन, सो मे बी दे वोंट टेल यू इनकम लेवल. उनका एजुकेशन क्या है, वो मैरिड है या नहीं. सो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपना कस्टमर अवतार डिफाइन कर पाओगे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ understanding our content strategy, which is our target audience. तो target audience में हमने अपना customer avatar बनाना सीख लिया. Now we will understand कि how our customer avatar is researching online. Let's understand the kind of consumer behavior we are seeing these days online. Today's customer is smart. We all are smart. We cannot assume that our customer, they would not research. 80%, 81% of the consumers today, they research before buying any product. So here you will have to step into the shoes of your customer and research about your product that you are selling. Like you are a buyer. For example, if you're selling something related, you're selling a supplement, for example, for a particular, to overcome a particular, say, limitation in your body.
So you'll have to search for that vitamin or that supplement, just like that a customer would do online. That what are the different options which are available. तो आपको अपने कस्टमर की तरह सोचकर और उसी की तरह रिसर्च करनी पड़ेगी कि मेरा कस्टमर, अगर मैं कस्टमर की तरह रिसर्च करूंगा तो उसे किस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, और उसको किस टाइप की कॉम्पिटिटर्स मेरा क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं. सो यू विल बी मोर अवेयर अबाउट द मार्केट. So this is understanding the customer behavior. You can do this on Quora. This is the link, if you can see in at the bottom of the screen, which is www.quora.com. You can go ahead and put any question there. You will get the most popular questions people are asking in and around your product. आपका फॉर एग्जाम्पल आप एक सप्लीमेंट कोई सेल करना चाहते हो, या आप एक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो कोरा पे जाओ और उसको टाइप करो. तो जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस के जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस प्रोडक्ट के अराउंड, वो आपको सारे कोरा ऊपर से नीचे लेके रैंक तक दिखा देगा. तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे मार्केट में. कोरा इज अ वेरी गुड साइट टू डू दैट रिसर्च. Second is Uber Suggest. Uber Suggest is will give you monthly searches for all the keywords in and around your niche. For example, I'm selling a makeup kit. So I'll say makeup kit, or for this particular occasion. So Uber Suggest will tell me exactly how many monthly searches are happening at a particular location in last 12 months on a monthly basis. So जिसका भी मंथली सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब हमें पता है कि ज्यादा मंथली सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं. So it will give us idea that what people are searching for in and around our niche. हमने कीवर्ड डाला अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऊबर सजेस्ट पे, इट विल गिव अस ऑल द अदर कीवर्ड्स, मतलब वो वेरिएशंस भी दे देगा कि मे बी वो मेकअप किट सर्च नहीं कर रहे हैं, मे बी कुछ और सर्च कर रहे हैं, मे बी हाउ टू डू मेकअप सर्च कर रहे हैं. सो इट विल गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एज वेल, which will be in and around the product that you're selling. So there's another tool called Keyword Planner, which will come along with the Google Ads. So if you create a free account on Google Ads, you can create a free account on Google Ads, and you can use Keyword Planner as well. And that is a tool which is directly provided by Google. So it will give you better or accurate data on monthly searches. So you will be able to understand what people are searching for on these on search engines like Google and Bing. This is another website just like Quora, where people ask questions. So which is answerthepublic.com. Domain is at the bottom of the screen. Here also you will understand the kind of questions people are asking in and around your product. अब हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, हम ये रिसर्च इसलिए कर रहे हैं, कस्टमर अवतार हमने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं कि हमारे कस्टमर अवतार क्या सर्च कर रहा है ऑनलाइन वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप की कीवर्ड्स डाल रहे हैं. सो दिस विल गिव अस इनफ कंटेंट आइडियाज इन अराउंड आवर प्रोडक्ट. अगर हम पैशनेट हैं उस चीज के बारे में, सो इट्स आवर मॉरल ऑब्लिगेशन टू अंडरस्टैंड कि उसको बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अराउंड हमारे क्या क्या क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन मार्केट में, क्या वो क्वेश्चंस में एड्रेस कर सकता हूँ, अगर नहीं एड्रेस कर सकते हो तो उसका आंसर ढूंढिए और उसके लिए वीडियो बनाइए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. So this activity is gonna give you a very good insight into what people are searching for in and around your product in the online market. The next would be do a survey among your target audience and see what are the questions. If you want to lose weight, for example, so what are the challenges that you're facing, lose weight, what kind of supplements are you using while using it, what is your diet plan. So all this thing you can go ahead and put it on social media, do a quick survey. Now there's an option within the Facebook as well to do a quick survey. Polls भी आप लोग कर सकते हो ये सब चीज करने के लिए. So there are different bunch of options you can for this kind of research that you'll have to do in and around your customer behavior online. Okay, so we have covered the first part of the content strategy, which is to understand about your customer avatar. अपने customer को जानना, कौन है वो कस्टमर, कहाँ रहता है, उसकी एज क्या है, वो किस तरीके की क्वेरी सर्च कर रहा है ऑनलाइन, वो
वो इस बारे में सर्च कर रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, या वो अपनी प्रॉब्लम डाल रहा है, वो लूज वेट डाल रहा है, वो वेट लॉस सप्लीमेंट्स डाल रहा है, या वो डाइट के बारे में ढूंढ रहा है कि वेट लॉस के लिए क्या चाहिए। तो आपको कस्टमर भी समझ में आ गया इस एक्टिविटी से, और कस्टमर क्या सर्च कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग द कंटेंट स्ट्रैटेजी, व्हिच इज द target audience, the ideal customer avatar. Now we are going to move to the second part, platform and behavior of these people on that particular platform. So today we're going to be talking about Instagram and Facebook. But before I get into Instagram and Facebook, I will want to give you an overview about the platforms. The platform, how platforms are divided. So there are two types of platform: push and pull. Pull platform means majorly means, so if I am looking for an information, where will I be? If I'm looking for information, I will go on either Google, either YouTube, either Bing to search for that information, because those are called search engines. So those platforms are called pull platforms. If I'm actively searching for an information, I won't go on Facebook or Instagram to search that information. People go on social media platforms to 90% of them go there to connect to someone or for entertainment purposes. 90% of them. So the major audience on social media platform is not asking anyone to show anything, but we are pushing our content onto them. So those are called push platforms. So hence pull and push. In pull platforms, for example, Google or your website is a pull platform, or a blog is a pull platform, or a YouTube is a pull platform, where somebody is searching for something and you're raising up your hand through your content and you're saying, I have this, please come to me. So that is pulling from a market where user is already aware what they'll have to look for, and there you're raising up your hand through your content and you're asking them, please come to me, I have this information, I have this product. On social media, they're not asking for something, they're just going there to connect to someone or for entertainment purposes. तो वहां पर आप अपना content push कर रहे हो, you are pushing your content onto them, and hence the attention span of people on platforms like social media is less. The attention span of people on push platform is less. Push platform पे लोगों की attention span कम है, इसलिए shorter form of content चलता है push platform पे. Full platform पे for example, अगर मैं किसी चीज में interested हूँ अभी और मैं search कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए लंबी वीडियो देखने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं ब्लॉग पढ़ने के लिए तैयार हूँ, because I am at that particular moment I am interested. So those are called pull platforms. इसलिए उसमें attention span is also better for people. Is that's why longer form of content, for example, blogs, longer form of videos works better on pull platforms. The quality of leads again on push platform will be not as better quality lead you'll find on pull platforms than push platforms. Because sometimes on push platforms people are not even aware. कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लोग अवेयर भी नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहे। एटलीस्ट पुल प्लेटफॉर्म में हमें पता है कि यूजर को पता है इस प्रोडक्ट के बारे में और इसलिए वो सर्च कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म्स में भी वो अवेयरनेस भी, हमको अवेयरनेस वाली स्टेज पुल प्लेटफॉर्म से एलिमिनेट हो जाती है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे अवेयरनेस वाली स्टेज भी होती है, जहाँ पे हमें अवेयर करना पड़ता है लोगों को कि इस टाइप के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में। इसलिए वहां पर सेल साइकिल लंबी होती है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, इधर सेल साइकिल छोटी होती है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। आज हम दो कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात करने वाले हैं, विच इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इस अपॉर्चुनिटी को हम इग्नोर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आवर टारगेट ऑडियंस इज स्पेंडिंग वे टू मच टाइम। हमको जब कुछ सर्च करना होता है तभी तो हम जाते हैं यूट्यूब पे और गूगल पे, बट जब हमें सर्च नहीं कर रहे होते, जब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, या फिर हमें किसी से कनेक्ट करना होता है, या हमें जनरल अपडेट चाहिए अपने कनेक्टेड लोगों की, तो हम कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया पे। और सोच so our target audience is spending way too much time on social media, and this opportunity cannot be ignored at any cost. So in order to do so, again, what are these? These are not social media platforms. These are advertising businesses who are trying to just keep, the only agenda they have is to keep the user on the platform and serve them with
more ads, so they can get that money from advertisers and who are wanting to sell you products. So let's understand, how the algorithm of Instagram and Facebook works. Suppose you upload a post, you upload a story, or you upload a post on Instagram or Facebook. So what will happen? What is the back end thing which is happening? So organically, वो सिर्फ 2 से 10% लोगों तक वो पोस्ट पहुंचता है. Only 2 to 10% of your organic audience. For example, if you have 1,000 followers, so only 50 to 100 followers will organically get the post notification or will see the post on their feed. And who are these people? Who are these people who will initially get your post? These are people that you interact with, who you chat with, who you see their stories, you comment on their post, you engage with them, their content in any way. So these are the people who will be served with your content first in their feed. And in terms of Facebook, it is even less than 5%. In Instagram's case, the organic reach is between 5 to 10%. In Facebook case, is less than 5%. In some cases, is less than 2% even. ऑर्गेनिक रीच बहुत कम होती है उस पोस्ट की. अब किस चीज पे डिपेंड करता है कि पोस्ट या आगे लोगों को और दिखाया जाएगा या नहीं. सो बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट रेट फ्रॉम दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, either Instagram and Facebook will restrict your reach, or it will further give you your reach. तो अब ये एंगेजमेंट रेट समझने की हम कोशिश करेंगे. बट एग्जैक्टली इज एंगेजमेंट रेट इज number of people who have seen your post and number of people who have interacted with them. For example, if I have a feed and I'm scrolling through, if I've scrolled through your post, so that gives an impression to Instagram that your post was not relevant to me, and hence the engagement rate will go down because I have seen your post, but I have chosen not to engage with them, not to engage with it. Similarly with Facebook. And if I go ahead and engage with it, for example, I like it, I comment it, I share it, I tag it. Either way, engagement rate, there's a score that they maintain. I don't know how much scores what, but like is scores less from a comment, will score less from a reshare, will score less, for a save. So like का engagement rate कम बढ़ेगा अगर सिर्फ like कर रहे हैं लोग. अगर comment कर रहे हैं तो थोड़ा engagement rate better होगा. अगर वो reshare कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं उसको, तो और एंगेजमेंट रेट बेटर होगा. So based on the engagement rate from this small group of people which they are organically serving, it will decide whether to restrict their reach there and then, or whether to serve it to other followers that you have. तो इन छोटे से ग्रुप ऑफ लोगों में अगर आपका एंगेजमेंट रेट अच्छा है, तो आपके दूसरे फॉलोअर्स तक भी आपके पोस्ट रीच होगा. और इवेंचुअली इंस्टाग्राम विल go out of your followers to make that content appear on explore pages. तो अगर आपको अपना कंटेंट अपने फॉलोअर्स के अलावा और भी लोगों से दिखाना है, दैट मींस आपको अपना एंगेजमेंट रेट इंटरैक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट इज द की to for making content online. Our first, more engagement means more reach. Our first priority of to create content is to create engaging content, not any type of content, but to create engaging content on the platform. Because if our content is engaging, it is telling the algorithm that this content is making users stay on the platform. आपका content लोगों को प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, वो इंटरेस्टेड है, तो वो ही तभी आपका कंटेंट वो आगे फॉलोअर्स को, इवन फॉलोअर्स से बियॉन्ड पुश करेंगे, आपको रीच बढ़ेगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अच्छा कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है. It's on. So first of all is CTA. We call this call to action. अगर हम अपने कस्टमर को बताएंगे ही नहीं करना क्या है, तो वो करेगा कैसे? So within our content, we need to tell them that do like, share, comment, tag your friends, save your reel, reshare, repost, story में डालो. All of this needs to be told. So this telling through your post is called call to action, or in short form we call it, digital marketers call it CTAs. So CTAs needs to be there in our content.
As you can see in this post on the right hand side, check out the stories, highlights, and website for more information. This is a CTA. So they're asking them that you should not only see this post, but go on my profile. A profile visit is also an engagement. If somebody is seeing your post and they're going to your profile, then it's again it increases the engagement rate. So अगर कोई आपकी पोस्ट देख रहा है और वो आपके प्रोफाइल पे जा रहा है तो अगेन इंस्टाग्राम को वो ये बता रहा है एल्गोरिदम को दैट दिस इज अ रेलेवेंट प्रोफाइल or a relevant post, we should push it more. We should give it better reach. So check out the stories, highlights, and website for more information. Interested in getting a filler? Better join us. Any questions about vitamins? Any questions or vitamins and supplement that also helps with muscle building? Drop them in the comments. So here they are asking to comment. What are the most important supplements and why? Put in the comment. Anyone here take collagen? Would love to hear what you think. So these are some of the form of the CTAs. You should definitely have CTAs not only within your descriptions but also within your content. आपको अपने पोस्ट के अंदर भी CTA रखना है. अगर आप वीडियो हो तो वीडियो के एंड में आप बोल सकते हो कि कमेंट, शेयर, लाइक, ऑल ऑफ दिस. एंड अगर वहां पर नहीं आपने रखा है तो डेफिनेटली आपको अपने डिस्क्रिप्शन में तो जरूर रखना है. The second practice is you will have to use all the forms of posting which are there. आपको वीडियोस और रील्स भी यूज करनी है, आपको कैराउजल्स भी यूज करने हैं, आपको स्टोरीज भी यूज करनी है, आपको लाइव भी यूज करने हैं. सिंगल ग्राफिक्स किसी को पोस्ट नहीं करने हैं. अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम ने एक अपडेट निकाला था जहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वी आर लिमिटिंग द रीच टू all the single graphic post. Don't do any single image post on Instagram because they have officially announced that we are not gonna give you good reach and it's never gonna be viral. So recently they have updated their algorithm in which they have turned all the video content to a reel to reels content. That means the demand and the supply of the reels was not good enough. So the demand of the reels to watch reels was way too much, and hence they'll have to convert all of the video content present on Instagram, whether it is live, whether it is IGTV video. They change that entire content. They turn that entire content into reels. So reels is the first and foremost priority for you to create content. Reels, and second is stories. Carousels and lives can be done, one per day, or you can do it, one per 2 day as well. Carousels. Live, you can do once or twice a week. But stories, you'll have to do 2 to 7 per day. And videos and reels, you'll have to do at least one per day. But if you cannot do one, ideally it should be 2 per day. But if you cannot do 2 per day, you should at least start from doing one reel per day. And this is where the consistency will come into play. आप जो भी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप एक रील डाल रहे हो, चाहे आप 2 रील्स डाल रहे हो, चाहे आप 5 स्टोरीज डाल रहे हो, चाहे आप 2 स्टोरीज डाल रहे हो, चाहे आप 7 स्टोरीज डाल रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहना. ये मत करना कि आज एक रील डाली, कल 2 डाल दी, परसों एक डाल दी. If you're putting one reel today, put only one reel tomorrow, only one reel day after. If you're putting 2 reels consistently, then maintain that kind of frequency within your content. So same with carousels. Carousels में आप एक 1 per day डाल दो. Don't use single images. I've just told you. Stories आप 2 to 7 per day जितनी भी आप story डाल सकते हो. And live at least go once a week. As I said, there are new options within Instagram now where you can collaborate with other collaborators, and you can post in collaboration. What would happen? That this post will go not only to your followers but to the followers of the person you are collaborating with or the creator that you are collaborating with as well. तो आपके ही फॉलोअर्स तक सिर्फ रीच नहीं होगा ये पोस्ट, जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो उसके पास भी रीच होगा, तो डेफिनेटली रीच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. तो ये वाला ऑप्शंस भी जरूर यूज करो. अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हो आप वीडियो, तो आप एक दूसरे के ऑडियंस को एक्सचेंज भी कर सकते हो. And this is a good way to increase the reach of your post as well.
overlay of short messages जो or viral trending memes and sounds. One of the quickest ways to grow on Instagram is to have a creator account and use their music library. Music library में if you go in the music library, uh, there will be music which will have this kind of upward arrow. If you can see on the screen, on the left hand side of the music community, you can see a upward arrow like this. So this upward arrow means there's Instagram is trying to push this music as of now. तो आपको भी ये music use करना है अपने video content के अंदर, so which will give you a boost, which will give your video boost. उस music के साथ आपकी reel भी boost होगी. So this is a very good way that all the creators are using today to increase their reach on Instagram, and you can use it. By the way, if you want to change your account from a normal account either to a business account or to a creator account, I would suggest you to go for the creator account because it will have all these things enabled. In business account, there are certain things which are restricted, but in creator account, all things are there. So you'll have to go to settings, you'll have to go to accounts, and you'll have to switch account type, and then there will be option of the creators account. Just switch to the creators account, and you'll have this option. So you will be able to use trending music within your video content as well. And this is one of the fastest ways to increase your reach on Instagram. You'll have to have longer descriptions in your Instagram content, because what would happen if you're writing a long description and people are staying on your post to read that long description, which is giving Instagram algorithm a sign that people are spending more time on this particular post. So it will push that post to larger audience. अगर आप बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखोगे और आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए आपकी पोस्ट पे लोग रुक रहे हैं, तो ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये बताता है कि ये पोस्ट रेलेवेंट है और इस पोस्ट को और लोगों को दिखाया जाए. सो इसलिए हमेशा आपको लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस वहां पर लिखनी है. Right amount of hashtags, use only 6 to 8 hashtags. अभी recent algorithm जो update आया था Instagram ने, वहां पे पहले सब क्या करते थे content creators abuse करना start कर दिया उन्होंने hashtags को. Content किसी और बारे में है but उसके hashtags किसी और डाल रहे हैं. 20 से 25 से 30 hashtags तक हर creator डाल रहा है. तो इस recent update में उन्होंने ये hashtags का हटा दिया. वो strategy काम नहीं करेगी जहाँ पे आप 20, 25, 30 hashtags डाल रहे हो. Your hashtags has to be limited between 6 to 8 at max. इसमें 2 से 3 industry related hashtags हैं. For example, beauty और fitness, health and fitness, mind fitness and weight loss. So थोड़े से आपके industry related, 2 से 3 आपके industry related hashtags होंगे. एक दो आपके post specific hashtag होंगे कि अगर आप वीडियो में बात कर रहे हो that how to lose weight within next 10 days using this particular exercise, तो उस particular exercise के ऊपर आपके 2 hashtags उस पे आप डालिए. And only use relevant hashtags, because if your hashtags do not match the content, your content is not gonna rank on those hashtags. सबसे अच्छा तरीका क्या है समझने का कि हमें क्या हैशटैग डालने चाहिए. जो हैशटैग आपके दिमाग में आ रहे हैं उन हैशटैग्स को आप जाके सर्च करो. अगर जिस टाइप का कंटेंट आप बना रहे हो वो उस पे ऑलरेडी रैंक कर रहा है, then your content is good enough and your hashtags are good enough. If again I'll just repeat this in English. So how would you know that your hashtag strategy is right? What you'll need to do, you'll have to list down the hashtags that you'll have to implement. You'll have to go and search those hashtags. If the kind of content which is already ranking on those hashtags is exactly like the content that you're gonna post or use those hashtags for, then your hashtag strategy is right. If that content which is ranking on those hashtags do not match, that means your your hashtag strategy is not right. So only post hashtags related to your content, related to your industry, related to your niche, and don't use irrelevant hashtags, and neither do copy paste the same hashtags in all of your posts. ऐसा भी मत करना सारे पोस्ट में आपका सेम ही हैशटैग चल रहा है हर एक जगह. अलग अलग हैशटैग्स यूज करना पोस्ट वाइज और जिस बारे में आप बात कर रहे हो.
लो क्वालिटी वीडियोस को और या लो क्वालिटी कंटेंट को इंस्टाग्राम कभी पुश नहीं करता. Always use high quality videos and high quality images on Instagram. Even if you have to use filters, effect doesn't matter. Use all the effects, use all the filters to make it look beautiful and high quality. जब आप उसको पोस्ट को किसी इमेज को पोस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है. कम क्वालिटी वाली अगर इमेजेस या वीडियोस को पोस्ट करोगे तो वो बहुत कम हो जाएगी. ऐसा मत करिए. हाई क्वालिटी, जितना बेटर आपका कैमरा होगा फोन का, जितना अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा भी यूज कर रहे हो, सो दैट इज ऑलवेज बेटर. बट इवन इफ इट इज अ फोन कैमरा, इट हैज टू बी अ डिसेंट फोन कैमरा, जो एटलीस्ट 40 में आपकी 4K में आपकी वीडियो या आपकी इमेज ले पाए. So always use high quality videos and high quality post. Otherwise, Instagram is gonna limit your reach. वो और ज़्यादा लोगों तक नहीं दिखाएगा वो. 4 बार से ज़्यादा एक दिन में मत पोस्ट करना. ये स्टोरीज के लिए बात नहीं हो रही है. Apart from stories, if you're doing, say, you're posting, a reel and a video, or maybe you're also going live, you're also doing IGTV. Don't do it more than 4 times a day. It's not recommended. There should be at least 1 hour gap between the post, and be consistent in whatever frequency you are posting. So you'll have to be consistent in the frequency of posting, and you'll have to have at least 1 hour of gap between the posts. Now this is a very interesting strategy, which is called a unicorn strategy. So look back in your account and see what kind of post is getting better reach than other posts. ऐसे नहीं होती, कभी कभी भी 5 उंगलियां एक साथ घी में नहीं होती, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है. तो कौन से पोस्ट है, कौन सा कंटेंट है जो मेरा, जिस पे लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, जिस पे मेरे को इंस्टाग्राम बेटर रीच लाके दे रहा है कंपेयर टू अदर पोस्ट. तो वो व्हाट आर दोस पोस्ट, व्हाट आर दोस pieces of content which is getting better traction than other posts in my own profile, and not just in my own profile but in my competitors profile and other creators profile as well. So आपको सिर्फ अपना अकाउंट नहीं चेक करना कि मेरे को किस चीज पे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही है, मेरे को इंस्टाग्राम किस चीज पे ज्यादा रीच दे रहा है, किस पे ज्यादा कमेंट दे रहा है. आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के भी अकाउंट जाके चेक करने हैं कि उसकी किस रील पे, उसकी किस वीडियो पे, किस स्टोरी पे बेटर एंगेजमेंट है, बेटर रीच है, बेटर लाइक्स है, बेटर कमेंट्स है. जब सो दिस एंटायर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड यूनिकॉर्न स्ट्रेटजी. जब आप ये देखने लग जाओगे किस टाइप का कंटेंट बन रहा है, तो बाकी सारे टाइप के कंटेंट को हटाओ, उसी टाइप का कंटेंट ज्यादा बनाओ, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि लोग भी ज्यादा एंगेज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम भी उसको ज्यादा पुश कर रहा है. दिस इज कॉल्ड यूनिकॉर्न स्ट्रेटजी. You do this not only to your own account, but you also do it with other people's account. Next is posting on the maximum number of followers, when maximum number of followers are active. So once you go into your Instagram Insight, you will see at what time of the day my followers are active. For example, if your target audience is homemakers, so you should not post early morning or late nights, right? Because they are not active, they're with family at that time. You should probably post between 12 to 5 for them if your target audience is homemakers. If your target audience is working professionals, you should not post in the mornings or during afternoons or evenings, because they'll be working at that time. So for them to post, the better time would be after 7 p.m. or 8 p.m. So according, go inside your analytics, अपने analytics के अंदर जाइए और ये देखिए कि किस टाइम पे, दिन के किस टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव हैं, और उसी टाइम पे आप ज्यादा पोस्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आपकी एंगेजमेंट बेटर हो, और एंगेजमेंट बेटर होगी तो रीच बेटर होगी. ये हम बात कर चुके हैं. So let's just summarize what we have learned today. It's not a short-term game. Content strategy is not a short-term game. Consistency in terms of posting, in terms of learning, and in terms of continuous improvement based on the feedback is the key to the social media. Again, just I'm gonna repeat this. आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उसमें कितने कंसिस्टेंट हो, आप फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हो, रोज 2 कर रहे हो तो रोज 2, रोज 1 कर रहे हो तो रोज 1, आप वो कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो.
रोज देख रहे हो कि रोज सीखने की कोशिश कर रहे हो कि एल्गोरिदम में क्या अपडेट आया है, किस टाइप की मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए, किस टाइप, रोज आप रिसर्च कर रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस की, किस टाइप की क्वेरीज पूछ रही है, कौन से मीम्स हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक है जो मैं अपने रील पे लगाऊंगा, सबके बारे में रोज लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और रोज बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिकली मींस एनालिटिक्स, कि आप अपने एनालिटिक्स में जाके देख रहे हो कि किन लोग मेरे साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस टाइम पे एक्टिव हैं। सो इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन एनालिटिक्स इज अनदर पिलर। सो दीज आर द थ्री मेजर पॉइंट्स is which is the key to crack the social media. Understanding the customer avatar and how they behave on the platform is critical to understand, to implement the good content strategy. कस्टमर अवतार को समझना और उनके बिहेवियर को समझना उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे वो आ रहे हैं, ये सबसे क्रूशियल है हमको एक अच्छी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। एंड creating high quality engaging content is the key to rapid growth on Instagram and on Facebook. And the last is unicorn strategy. जो content चल रहा है अपने लिए और हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए, उसको समझो कि ये इस टाइप का कंटेंट चल रहा है, उसके एनालिटिक्स में जाओ और उसी टाइप का कंटेंट ज्यादा बनाओ। सो विच इज द यूनिकॉर्न स्ट्रेटजी, ओनली मेक content which has already worked for you or which is also working for your competitors. Use Eliminate everything else and only make that kind of content, which is called the unicorn stats. I think this is it from my end. I tried to cover a lot within this given time. I hope I have made it in time, Hitaishi. Yes, Agrim. Thank you so much for the very informative session. आई होप हम सबको समझ आया हो। हमने पूरी कोशिश करी कि हम इस सेशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिलीवर करें। थैंक यू सो मच। सो मूविंग ऑन, वी आर कीपिंग द हाउस ओपन फॉर क्वेश्चंस। किसी के और कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और आप हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को केटर कर सकें टाइम को ध्यान में रखते हुए। And Agrim, we will start with some few basic questions which we got during the presentation. So we would people are confused between what are carousels basically, कि carousel क्या है, और दूसरा कि हम लोग जानना चाहते हैं कि engagement को आप कैसे what do you exactly mean by engagement when you say when in Instagram and Facebook? तो कैराजल पोस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बल्कि आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो जिस जिस भी पोस्ट में मल्टीपल सिंगल इमेजेस होती हैं जो आप स्क्रॉल कर सकते हो, दोज आर द कैरोसेल पोस्ट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैरोसेल पोस्ट, जो आपको स्लाइड करके आप अगली इमेज पे पहुंचते हो। इसमें एक सिंगल इमेज नहीं होती, जिसमें मल्टीपल सिंगल इमेजेस होती हैं, या फिर वीडियोस और इमेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है। So combination of multiple single images or combination of single images and videos in a single post is called carousel post. I hope I'm clear on this. Okay, the second question was engagement rate. Okay, so how to calculate the engagement rate? Agrim, you can start with what is engagement in the first place and then move on to engagement rate. Okay, Like how okay, to calculate engagement. okay. So there are two basic type of metrics on Instagram. One is engagement and one is impressions. So let's understand what is the impression. अगर आपने कुछ पोस्ट किया, if you have posted something and that is coming on my feed, my home page, and when we open Instagram, that is the dashboard, that is the feed. So if it has come to my feed, then it is considered as one impression. अगर आपने पोस्ट किया और वो मेरी फीड पे आ गया, तो वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। अब मैंने वो मेरी फीड पे तो आ गया, अगर मैंने उसको स्क्रॉल थ्रू कर दिया, इफ आई स्क्रॉल थ्रू योर पोस्ट एंड आई डिड नथिंग विद योर पोस्ट, अगर मैंने उस आपके पोस्ट के साथ कुछ नहीं किया, तो वो सिर्फ एक इंप्रेशन काउंट हुआ, मैंने एंगेज नहीं किया। एंगेजमेंट मींस अगर मैं आपके पोस्ट के ऊपर लाइक करता हूँ, या कमेंट करता हूँ, या उसको शेयर करता हूँ, या फिर उसको सेव करता हूँ,
या फिर उसकी पोस्ट से लेकर मैं आपके प्रोफाइल पे जाता हूँ, या फिर मैं आपके पोस्ट के को खोलकर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ. सो ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर द एंगेजमेंट सेक्शन. So impressions versus engagement we call as engagement rate. अगर 100 लोगों के पास impressions गए, if 100 people got your post on their feed and 50 of them did something on your post, either they liked, they commented, or they visited your profile, or they tagged their friends, or they saved, or they reshared, all of this. So your engagement rate is 50%. A good engagement rate on Instagram, it depends upon the industry, it changes industry wise, but a good engagement rate on Instagram varies between 12 to 20%. तो अगर आपका 12 to 20% आपका engagement rate है, अगर आप वो maintain कर रहे हो based on अपने वो smaller group में अपने followers में, तो वो आपका explore page तक भी ले जाएगा Instagram. Thanks, Agrim. I think that explains it well. Moving on, एक question है हमारे पास, which people are asking कि do grids matter? Like, should grids be taken care of while posting on Instagram? So, if you could answer that. Grids only matter when somebody is visiting your profile. और ग्रिड्स का ऑल्दो एक कल्चर आया था, बट एल्गोरिदम वाइज इट डजंट. आपकी रीच और आपकी एंगेजमेंट कभी मैटर नहीं करेगी कि आप ग्रिड मेंटेन कर रहे हो अपनी प्रोफाइल पे, नहीं. और वो भी आपकी प्रोफाइल विजिट्स का रेशियो 1% से भी कम होता है. अगर 100 लोगों ने आपका पोस्ट देखा और उसमें से 10 लोगों ने आपकी एंगेजमेंट करी है, 20 लोगों ने एंगेजमेंट करी, उसमें से शायद एक जना आपकी प्रोफाइल विजिट करे, है ना. तो डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रिड. अगर आप ग्रिड मेंटेन नहीं करेंगे, ग्रिड से आप कभी बेटर रीच नहीं आ पाएगी आपकी, और ग्रिड से कभी आप कभी वायरल नहीं हो पाओगे, कभी एक्सप्लोर पेज तक नहीं आ पाओगे. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू डू इट टू मेक देयर प्रोफाइल बेटर. आप प्रोफाइल विजिट कैंपेन्स चला रहे हो, है ना, देन योर ग्रिड वुड मैटर. अदरवाइज to generate organic leads, to generate organic sales, I would never, I would not suggest you to focus too much on grades. Thanks, Agrim. So, moving on, we would, we are getting questions that basically people are asking, how does Instagram reacts to videos made using AI tools? Is it mandatory to show face for better reach? And we are getting this question a lot, that is it mandatory for a human, for human to be in the videos to get maximum reach, or how do we, or is it like, okay, if it's just a product? No, recent Instagram survey, what they tell is uh, pet videos, which includes kittens and dogs, and smiling faces. These are the most two popular things in the world right now, on which people actually stop. So it doesn't matter if you're there on the post or not, but it would be better if you're building a personal brand. Otherwise, you're just building that product's brand. आपको आज वो प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो और सिर्फ प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही कन्विंस होंगे लोग. आपके पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं. Social media, what we are doing here today is to try to build a personal influence, a personal brand. So कल अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी सेल करना चाहो तो वो प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो. So always focus on creating a personal brand and not that product brand, because products can change over time that you can sell. I will suggest that have a smiling face and explain about your product and how to use that product. Educate your audience about why this product and not any other product. Educate your audience about how to use it properly, because some people buy the product and they don't know how to use it. So not only convey your audience that this product should be used, but tell them that how and why this product should be used. उनको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसको यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए. जस्ट एजुकेट देम. Thanks, Agrim. Moving on, so we are getting this question also a lot. If you could just explain again two things: A, the Quora, Uber Suggest, and Answer the Public, the platforms that you explained for understanding the audiences. Also, if you could again go in a gist explain the push and pull media platforms on social. Okay,
फॉर एग्जाम्पल इस सेशन की बात करते हैं, अगर मेरे को एक अच्छी इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी अपनी कंटेंट मार्केटिंग के लिए चाहिए, so if I want to be a good implement a good Instagram strategy, where will I go and search for a good Instagram strategy? I will not search, and I will not search it on Instagram, like no, Instagram पे तो वो strategies create हो रही है, where I will go on YouTube, I will go on Google and search for what are the good Instagram strategies, what is the good Instagram algorithm, what are the algorithm updates. So whenever somebody is aware about what they'll have to search for, they will go on search engines, and search engines are pull platforms where we are raising up our content through our website, through our blogs, through our videos, and we are saying, you're looking for this information, I have this information, please come to me. So you're pulling the customer from there, you're pulling a prospect from there, hence this is called pull market. Pull market again, which means customer is already aware and they are searching for it, they're actively searching for it, and hence you're showing up your hand through your content and asking them to come to you. That is called pull marketing. Push marketing, on the other hand, people are not looking for anything, you are pushing your content, they're not actively searching for anything, you're pushing your content onto them based on their interest and behaviors, which these social media platforms capture. I hope now you're clear about push and pull. Yes. So Agrum, we got a very interesting question that someone has asked that it's the you said that in the one second I'm just going through. So basically, why push platforms showed longer sales cycle and quicker sales. People generally think that it's otherwise. Like when you're basically why when you're pushing content, why you're getting why is there a longer sales cycle? No, Why? I think there was a mistake within the presentation. I'll tell you. So, push platforms means longer sales cycle means less sales. Pull Quicker. platforms means less sales. And pull platform means quicker sales cycles and more sales. Better quality leads and more sales is something which is the characteristics of a pull marketing strategy. And for a push marketing strategy, because awareness, you'll have to also aware people so additional step is there on platforms like Instagram and Facebook, and because of that additional step, additional time is needed to nurture that audience and convert into sales. So better quality leads you'll find on platforms, lower quality leads on push platforms, but the number of people who will be available is totally different. For example, if I'm in a particular segment, for example, beauty. So people who are actively searching would be only 2% of the people who this product can be sold to, which is on social media. So the number of people in pull market is way too less, and number of people in push market, which is the social media, is huge, and that's why we cannot ignore. But push market means longer sales cycle, less quality leads, and less sales. But if you're comparing these two in comparison, there's pros and cons to each platform. अगर पुश प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो पुश प्लेटफॉर्म पे हमें 100 लोग मिलेंगे, उसमें से 10 लीड्स मिलेंगी और हमें एक सेल होगी, है ना। और पुल प्लेटफॉर्म पे हमको 10 लोग मिलेंगे, उसमें से 2 लीड्स मिलेंगी और एक सेल होगी। तो सेल दोनों एक ही हो रही है, उधर 100 लोग हैं इस वजह से एक सेल हो रही है, इधर 10 इंटरेस्टेड लोग हैं इस वजह से सेल हो रही है। तो उधर लोग कम है पुल मार्केट में और लोग ज्यादा है पुश मार्केट में। सेल साइकिल छोटी है पुल मार्केट में, क्वालिटी ऑफ लीड बेटर है, अटेंशन स्पैन ज्यादा है। और पुश मार्केट में सेल साइकिल बड़ी है, अटेंशन स्पैन कम है, शॉर्टर फॉर्म ऑफ कंटेंट इसलिए सबसे ज्यादा चलता है। अगर आप रील्स वगैरह भी बना रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम। 5 से 15 सेकंड तक की रील्स हैं वो सबसे ज्यादा चलती है। 5 से 15 सेकंड की रील्स आप हमेशा देखो, अपने कंटेंट जाके देखो जो वायरल होते हैं कंटेंट, उसमें भी 5 to 15 second reels are the most popular reels as of now, because the attention span of people is so less on push platforms, and this is how it works between push and pull. Thanks, Agrim. Thanks. It was quite an explanation. I hope हम सबको समझ में आ गया है
कि पुल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और पुश प्लेटफॉर्म्स क्या हैं. Moving on, Agrim, there is some confusion regarding the creator account. So people are asking if there is a fee to have a creator account, and if inside details, are they available only for creator account, or are they available for business account also? People also have a confusion between what is business account and what is creator account. If you just could spend a minute or two to explain that. Sure. So first of all, no, creator account do not charge you to do anything. So creator account is free. And abhi recently Instagram has also started monetization. So monetization also can also happen both on business accounts and creators account. Creators account means if you're a creator and you want to create content, that's why then you will go for creators account. But if you want to, for example, sell products, there is a way to sell products directly on Instagram as well, where you can maintain a shop and do all of those things. For that, you will need a GST number. So if you are registered on Instagram with your GST number, then you cannot be a creator. You will have to be a business, and that's the difference between a business and a creator. तो अगर आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है वहाँ पर और क्रिएटर अकाउंट में आपको थोड़े से ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं. मैंने एक स्लाइड भी इसके लिए रखी है. I'll just show you that slide. हमें पोस्ट की एनालिटिक्स दोनों अकाउंट में मिलती है. इंस्टाग्राम क्रिएटर स्टूडियो को हमें मिक्स करने का, रील्स को और ऐड करने के फिल्टर्स वगैरह दोनों जगह मिलते हैं. हमें प्रोडक्ट्स को टैग करने का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि हम एक बिजनेस है, तो हम दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को नहीं टैग कर सकते. हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं. तो हमें कभी भी दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को टैग करने का मौका नहीं मिलता अगर हम बिजनेस अकाउंट है. स्पॉन्सरशिप्स को भी नहीं टैग करने का मौका मिलता जो कि क्रिएटर्स में एनेबल्ड है. एंड हम प्राइवेट भी नहीं जा सकते. जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटर्स अकाउंट कैन गो प्राइवेट, बट बिजनेस अकाउंट कैन नेवर गो प्राइवेट. So these are the basic options, and you cannot set up a shop, an Instagram shop using a creator account. तो आप सिर्फ business account में एक shop create कर सकते हैं. So this is the basic difference, and there is no charge, for any of these accounts. Sure, thanks Agrim. Thanks. I think that was quite an informative session, and I hope हमने ज़्यादातर हम लोग सबने categorize करके सबके questions हमने answer कर दिए हैं. That was a great session from your end. Thank you everyone for joining, for taking time out on a weekend. Thank you so much. Thanks Agrim. Thanks a lot. Thank you so much for being a wonderful audience for all these questions. And thank you so much for giving us this opportunity. I'm feeling excited. What everybody is going to implement after the session. Please let Hitaishi and the entire Ambit team know after the session that what all you're going to implement, and come back to us with all the questions that you might and any challenge that you might face after implementing all of this. Yes, definitely. अगर आप लोगों के कोई भी और additional सवाल हैं तो please अपने account managers को please reach out to them. And हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको we're always there with you for all your queries. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thanks a lot. Thank you so much. Recording stopped.